Hello students, this is the last session of this chapter, Longitudes and Latitudes, Locating Places. I know that many of you have not purchased books and I am trying to clear everything with the help of video. If you have any problem, please write in comment box. Today we are going to learn the difference between longitude and latitudes. Now, number one, the first difference is these are vertical lines joining the North Pole and South Pole. Vertical lines joining North Pole to South Pole. And these lines are horizontal lines running parallel to the equator. ये जो है parallel lines हैं जो कि equator से के parallel चलती हैं. These are equal in length. ये सारी lines क्या होंगी? Equal होती हैं. लेंथ में, लंबाई में इक्वल होंगी, कहीं भी छोटी बड़ी नहीं. दीज लाइन्स आर डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर. ये जो लाइन्स हैं जैसे जैसे हम पोल्स की ओर जाएंगे ये जो इनकी लेंथ जो है वो कम होती जाती है, धीमे धीमे ये छोटी होती जाती हैं. The lines are numbered starting with the prime meridian marked as 0 degree longitude. ये स्टार्ट होती हैं 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो कि यहाँ पर आपने देखा होगा पहले फिगर में 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से स्टार्ट होती हैं. और ये लाइन्स हैं नंबर्ड स्टार्टिंग विद द इक्वेटर मार्क्ड एज 0 डिग्री. ये 0 डिग्री इक्वेटर से शुरू होती हैं, 0 डिग्री इक्वेटर से. दे आर 360 इन टोटल. ये जो है पूरी 360, यहाँ से जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स बनती हैं वो टोटल 360 बनती हैं. और दे आर 180 इन टोटल. और ये 180 टोटल 180 लाइन्स हैं. दीज आर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ईस्टर्न हेमिस्फीयर ये, वेस्टर्न हेमिस्फीयर ये. ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 डिग्री और यहाँ भी 180 डिग्री. देयर आर 90 लैटिट्यूड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 90 लैटिट्यूड्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. 90 लैटिट्यूड्स यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और 90 साउदर्न हेमिस्फीयर में. नाउ स्टूडेंट्स, recap or summary of this lesson. Number 1, there are two types of imaginary lines. Number 1 is latitudes, lines drawn from east to west. Number 2 is longitude, lines which joins the North Pole and South Pole. Number 2, equator. It is the longest latitude. It divides the earth into two halves. Number 3, north of equator is northern hemisphere. North equator के north में आ जाएंगे. This part is northern hemisphere and south of equator is southern hemisphere. Now number 4, the equator is 0 degree latitude and prime meridian is 0 degree longitude. Equator जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को बोलते हैं और प्राइम मेरिडियन जो है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है. इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है? द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 180 डिग्री वेस्ट ईस्ट, 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड आर द सेम लाइन. एक ही लाइन है, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट. और इसी लाइन को दैट द सेम लाइन एंड इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन. और इसी लाइन को हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन. नाउ ग्रिड, नेटवर्क ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड ग्रिड. माने जो नेट बनता है लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का वो ग्रिड कहलाता है. स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू ड्रॉ ऑल द डायग्राम्स like latitudes, longitudes and the important lines of latitudes. All of you draw it in your notebooks. Okay, then I am writing some word meanings on board and you have to write these all word meanings in your notebook. Students, these are some word meanings. Number 1, globe. It is the model of the earth. Axis, it is an imaginary line on which the earth rotates. Longitude, it is the line which joins the North Pole and South Pole. Latitude, they are lines drawn from east to west.
Equator, imaginary line that divides the earth into two halves. Prime meridian, 0 degree longitude, passes through the Greenwich near London, is called prime meridian. International dateline, 180 degree east and 180 degree west longitude are the same lines, called international dateline. Grid, network of longitudes and latitudes. Students, all of you write all these word meanings in your copy. Draw all the diagram which I draw in this chapter. You will draw it in your notebooks, and I am giving you question answers, exercises, all in homework. You will do it also, and we will meet in next session with new chapter. Bye. Stay home, stay healthy.